Good morning class. Today we are going to discuss percentage composition, empirical formula and molecular formula. Now percentage composition, it gives you relative mass of constituent present in its 100 parts. For example, water H2O, there are two constituents, two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. तो हम इनका परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन करेंगे एंड फार्मूला यूज इज मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट. जैसे आपको हाइड्रोजन का पता करना है तो मास ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट इन अ कंपाउंड divided by molar mass of the compound into 100. So let's take the example of water. Percentage of hydrogen, it is equal to 2 is its atomic mass upon 18. 2 upon 18 into 100. It comes out to be 11.11%. एंड इसका दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑक्सीजन. सो वी विल डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. 16 डिवाइडेड बाय 18 into 100 and it's come out to 88.89%. तो आपके वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज है 11.11% and oxygen का है 88.89% and that is total 100%. In this way you can find out percentage composition of any element in a compound. Now we are going to discuss empirical formula and molecular formula. Molecular formula gives you absolute numbers of atoms present in a compound. For example, benzene C6H6, ethene C2H4, diborane P2H6, glucose C6H12O6, sodium carbonate Na2CO3 and copper sulfate CuSO4. It means there are present 6 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen in benzene exactly, and so on. Now we come to empirical formula. It represents simple whole number ratio of various atoms present in a compound. So the basic difference is it gives absolute number and it gives simple whole number ratio. So the above example of molecular formulae we will again take, but this time we are going to write empirical formula. So first comes to benzene. Benzene empirical formula will be 6:6. That means 1:1. So its empirical formula is CH. Similarly, C2H4, ethene, its empirical formula will be 1:2. So it will be CH2. Diborane B2H6, 2:6 comes 1:3. So we will write B1H3. तो ये आपका डाइबोरेन का empirical formula आ गया. और ग्लूकोज C6H12O6, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1:2:1. सो वी विल राइट CH2O. सोडियम कार्बोनेट का ये सिंपल रेशियो ही है, ये आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. तो इट विल हैव सेम molecular formula as well as empirical formula. And similar the case with copper sulfate. Now by taking all these examples, it must be clear to you what is the basic difference between empirical formula and molecular formula. Now what is the relation between molecular formula and empirical formula? Molecular formula is equal to N into empirical formula. Now what is N? N is whole number 1, 2, 3 and so on. And how we can determine N? N is equal to molar mass divided by empirical formula mass. For example, benzene C6H6, 12 into 6, 72,
प्लस H6 78। तो 78 तो इसका क्या हो गया आपका मोलर मास, और वहीं पे इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास 12 प्लस 1 तो इट इज़ 13। अब अगर आपको इसका n निकालना है तो n विल बी 78 अपॉन 13 एंड इट विल कम इक्वल टू 6। n will come equal to 6, and when we multiply with empirical formula 6 into CH, so it will be C6H6. So in this way we can find out n. Now we will discuss steps which are used to determine empirical formula. We will discuss one by one. For this, first step is to know the percentage composition of each element. Now, percentage composition of each element, I told you how you can determine. For example, if we have given you element CHO and their percentage composition are 46.67 hydrogen and oxygen percentage is 53.33. Second step, आप क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। इसके लिए आपको परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा। सो कार्बन का एटॉमिक मास है 12, इधर लिख दीजिए, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। Here I have written all this figure. Now we will divide percentage by atomic mass. You have 40 divided by 12, 3.33, hydrogen 6.61 and oxygen 53.3 divided by 16. So it will come 3.33 again. अब इनमें से जो सबसे छोटा है, like I have written, divide the above result obtained with the least among them to obtain simple whole number ratio. तो आपके पास यहाँ पे है 3.33, 6.67 and again 3.33. तो least number is 3.33. We will divide these ratio obtained with least number. So we will have 3.33 divided by 3.33 equal to 1. Here 6.67 divided by 3.33, it will be 2. And here 3.33 again divided by 3.33, 1. तो सिंपल रेशो आपकी है 1 to 1। और आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ लिख लेंगे साइड में CHO, सबस्क्रिप्ट में आप नीचे इनके सिंपल होल नंबर रेशियोज़ लिख देंगे। तो ये आपकी 1 जो हम यूजली लिखते नहीं है, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 1। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया CH2O। यस, आप जब भी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, यू हैव टू मेक अ टेबल लाइक दिस, and I have given you one more numerical to do practice. Now suppose we have find out empirical formula. Now I am giving you the mass. The mass of this compound is 180. आपको मैंने इसका मास बता दिया जो कि आया है 180, और इस एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास क्या हो जाएगा, C1H2O1 मीन्स 12 प्लस 2 प्लस 16 दैट इज़ इक्वल टू 30। तो n आपका आ गया 180 अपॉन 30 दैट इज़ इक्वल टू 6। अब आप क्या लिखेंगे, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 इंटू बाय 6। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बन जाएगा C6H12O6। नाउ
This is all for today. Thank you. I have given you one more example. You can solve it from the notes. Till then, good day.